नमस्कार, मैं गीता वर्मा। आज हम आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ हैं के गौतम जी। जिस तरीके से 10% आरक्षण सवर्णों को दिया गया है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या पिटीशन फाइल की है, आइए बात करते हैं हम के गौतम जी से। जी मैडम, ये आज हमने मिस्टर जीवन कुमार के नाम से पिटीशन फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में, जो आज 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो अपर कास्ट को 10% रिजर्वेशन दिया गया है उसके अगेंस्ट फाइल किया गया है। हमारे जो पिटिशनर हैं, क्लाइंट हैं मिस्टर जीवन कुमार, ये एजुटेशनल मूवमेंट से भी जुड़े हुए हैं और इनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके थ्रू ये काम करते हैं। इनको ऐसा लगा कि ये जो रिजर्वेशन दिया गया है गलत दिया गया है, जिसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। जब संविधान में कोई प्रावधान नहीं है तो इकोनॉमिकल क्राइटेरिया के हिसाब से कैसे रिजर्वेशन दे दिया गया है, ये इनका विचार था। और संविधान को एकदम पलटने की या फिर बदलने की, संविधान को बदलने का प्रयास किया गया, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि संविधान में जो प्रावधान नहीं है उसके जो प्रावधान नहीं है उसी में अमेंडमेंट कर दिया गया है, जो देश हित में नहीं है, देश के खिलाफ है। तो हमारे समाज के जो जागरूक लोग हैं वो अपने जागरूकता से सामने आए हैं और उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त करी है। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया कि सर ऐसा अमेंडमेंट हुआ है, इस पर हमें कुछ करना है, पिटीशन डालनी है। तो मैंने भी अब पहले उसको रिसर्च किया कि क्या है एक्चुअल अमेंडमेंट है क्या। 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 हुआ है, वो एक्चुअल में क्या अमेंडमेंट है, उसका अध्ययन करने में पता लगा कि जो इकोनॉमिक आर्थिक आधार पे जो आरक्षण दिया गया है, वो जब मैंने अध्ययन के पाया कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि आर्थिक आरक्षण दिया जा सके। जब संविधान में आर्थिक आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि आज जो भी प्रावधान है वो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं उन्हीं को आरक्षण दिया गया है, ताकि वो समान धारा में आ सकें और सबके बीच में आराम से उठ बैठ सकें, जिससे अपना जीवन यापन भी कर सकें। शिक्षा का समान अवसर चाहिए उन्हें। अभी हमारे देश में बहुत गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जिनके लिए सरकारें कुछ काम नहीं करती हैं, इसलिए एक आरक्षण का प्रावधान दिया गया था। तो हमने इस पिटीशन में यही मार्फत कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो है 50% की सीलिंग लगा रखी है कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होगा। उसके बावजूद भारत सरकार ने पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास कर दिया गया है जो संवैधानिक नहीं है, और इन्होंने जो आरक्षण दिया है वो 50% के अतिरिक्त 49.5 के अतिरिक्त 10% एक्स्ट्रा दिया है, जो संविधान विरुद्ध है। और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने भी बता रखा है कि पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी यदि संशोधन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में आता है, और सुप्रीम कोर्ट उस पर जब चाहे तब उसमें रिव्यू कर सकती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये पिटीशन फाइल करी है। सुप्रीम कोर्ट का अपना 2007 का जजमेंट है आईआर कोहली का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोल रखा है कि जो संवैधानिक प्रावधान अमेंडमेंट होता है तो उसका सुप्रीम कोर्ट प्रिव्यू कर सकती है। और ये हम कहेंगे कि ये गोलकनाथ जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आया है लार्जर बेंच का, उसके भी अगेंस्ट है, क्योंकि गोलकनाथ ने सीधे स्पष्ट किया गया है कि कोई भी अमेंडमेंट भारत सरकार पार्लियामेंट कर सकती है, बट जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उससे कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, जो संविधान की आत्मा है उससे कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। और यदि किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा। सुप्रीम कोर्ट, हमने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का एक गार्जियन है, गार्जियन होने के नाते सुप्रीम कोर्ट उसमें देख सकता है कि क्या पार्लियामेंट सही कर रही है, क्या गलत कर रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारे जो जीवन कुमार हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के लिए चिंता व्यक्त करते हैं, इन्होंने चिंता व्यक्त करी है। और इसका जो है भारत सरकार ने इस समय और जो पार्लियामेंट के द्वारा जो पास हुआ है, ये टोटली जो है एक पॉलिटिकल एजेंडा है, ये पॉलिटिकली एजेंडा है, लोगों को लुभाने का प्रयास किया गया है। जैसे चुनाव आने वाले हैं, क्या इसी वजह से तो नहीं किया गया? बिल्कुल, आपने सही कहा, ये चुनाव आने की वजह से ही किया गया है और जल्दबाजी में बिल पेश किया गया है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा एक बार प्रयास जो है 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में किया जा चुका है, और भी कई सारी सरकारें आई हैं, उन्होंने ऐसा प्रयास किया है, पर इसका रिजल्ट उल्टा हुआ है। पर जो जनता है हमारी बहुत समझदार है, वो सब समझती है कि कौन सा काम कब किया गया है, क्यों किया गया है। तो मैंने अपनी पिटीशन में भी इसको ग्राउंड लिया हुआ है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है
पॉलिटिकली एजेंडा के तहत इसको ये अमेंडमेंट किया है, जो कि सरासर गलत है, संविधान के विरुद्ध है और ये सुप्रीम कोर्ट में ये अमेंडमेंट टिक नहीं पाएगा। और हमने ये भी दरख्वास्त की है सुप्रीम कोर्ट से कि इसको प्राइमा फेसाई जो अभी तो फ़िलहाल तो इस पर स्टे लगाया जाए, क्योंकि इस पर प्रेसिडेंट का एसेंट मिल चुका है, तो इस पर पहले स्टे लगाया जाए, उसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ है इसको खारिज कर दिया जाए। मैं अब चाहूँगा आपके हमारे जो जीवन कुमार जी हैं उनसे बात करें और उनके विचार दें। Actually, first of all, I thanks to Mr. KKL Gautam ji, who filed a PL against this 10% reservation. You can see in depth of the Savarna's mindset. These people wanted to destroy the Indian Constitution. Already these people made their resolution and their agenda also. They wanted to redraft the Constitution, Indian Constitution, which was given by Baba Saheb Ambedkar. So now this amendment, this bill, it has to affect the OBC people, because OBC people are much more number in India. More than 55, according to the 2011 census, more than 55% are OBC community. But in bureaucracy, you can see the bureaucracy. There is even a 4% OBC people are not in bureaucracy. When you take into the consider into that group A and group B, you cannot find a 2% OBC people's representations are there in the bureaucracy. Even in Supreme Court also, in High Court also, the more judges are surrounded and occupied the Savarna group only, upper caste only. I don't know how these people made pass this resolution. I don't know. But we have, as a lot of people are nowadays, they are saying that we want to save the Constitution, Indian Constitution, Indian Constitution. But these people, the Savarna people, these Congress, BJP and Communist people are all in the hands of Brahminical people. The whole party is in the hands of upper caste people. So these people, if you see, last 60 years in cabinet, more than 70% occupied by these Savarna people. There is no evidence these people, the Savarna people, are facing a lot of atrocity or humiliation or anything. You cannot find a single upper caste people living in the slum area. So as a Bahujan, 85% Bahujan, we are going to affect in the according to this bill. So we have to consolidate, we have to motivate the whole SC, ST, OBC people and struggle against these people. So we are, at the same time, we are going to initiate through this filing today. We filed a case. So in future we are going to the road to mobilize the people, and that people's verdict is powerful than the Supreme Court verdict. So we are believing the people's verdict also. So after that we are going to the public to motivate and consolidate all the SC, ST, OBC, around 85% people in India. Because I am a senior consideramist, I am the follower of consideramist. So as a consideramist, we have to go and consolidate all the SC, ST, OBC community under the one umbrella. At the same time, you can see coming election, we will give the good lesson to the Savarna people. First, I would like to begin with exactly what is this bill all about. Is it something designed for vote bank politics? Why now? Just before the elections are due in 2019, we find that this bill has come up. Fully well, I am sure people are aware that on the floor of the Supreme Court, this is going to be trashed. Definitely it's going to be trashed. Because number one, it is against the spirit of the Constitution. And besides this, this bill will create nothing but further disintegration of the society. Our society in India, already we are divided into more than 6,000, 7,000 castes. And now with this, you are further going to divide the Savarnas also. So where are we heading to? It is going to be some kind of so much of violation of the Constitution that it's going to definitely, the outcome is going to be violence. And the people are now understanding how this government is working.
and they are now trying to appease the Savarna class by giving them 10% reservation, totally against the constitutional spirit. And with this, you will see that altruism as such, as a subject. If you say this person is poor, give him some, the society should come forward and give him some money and help him. Don't you think that every other person is going to try to show himself or herself as poorer than the other? So it is definitely going to lead to more corruption in the society. When people will come forward, even if they are not poor, they are coming forward to say, I am poor, I should be given this reservation. Reservation was provided mainly because of the social backwardness, due to the social injustice to the people, never on the basis of on economics or their monetary or financial conditions. So as such, I think this is totally against the constitution, number one, as I said, and we should raise a voice against them, which Mr. Jeevan Malla here, who has been active as a politician from South India, Chennai, he has taken up this cause, and he's been active since the last more than 20 years now, Jeevan. And we have been putting our heads together, and we shall see. We shall definitely challenge this in the court of law. And the reasons which we feel strongly that it should be challenged is that the Savarna class is representing in all the institutions more than 70 to 80% of the people in the institutions are Savarna class. So why do you need the reservation? It's a ridiculous bill being passed. It takes 2 days for them to come up. And one more thing, you will find that the parties will change. Now and then there will be a change of the parties, but the ruling class will never change in this country. Ruling class always remains the same. Yes. So it is the Savarna class which is ruling for the last 70 years. What have they done? If they have not been able to fill in the backlog of all the SC and ST and OBC seats, even now the representation of the SCs and STs and OBCs is less than half of what it should be in all the institutions. And with the Savarnas coming in with a 10%, what is the guarantee that they will not exploit that kind of reservation, where the Savarnas will be put in their choice of Savarnas as much as possible? Well, what is the guarantee that this kind of a fallback won't happen? So it is, I think, every citizen in the country, even the Savarnas themselves, should challenge this bill and come out to protest against it, so that we can have a more peaceful and better environment in this country than what has been given to us since the past 4.5 years by this government. That's it. Thank you.